Welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो. Like previous, we have started the MCQ series for environment, and this time also we'll go for the geography series. Importance तो हमें जानी चाहिए कि geography और environment is very pivotal. जब देखिए कि more than 35 questions पाखापाखि दिखता है सीखा उससे. And of course, now the questions trend has been changed over the years. Past 2 years ago, samane much of the things that they are asking analytical. Samane इनकर जब हमें देखा कि यहाँ पछले reason because it is the demand of UGC. So and we should know the details about the resources and the soils, the vegetations, and the demography, etc. Like the whole of a country or a state, right? So let us know धीरे धीरे सही अनुसार हम analytical way रे पढ़िबा. प्रथम डिस्कस करिवा आज फर्स्ट क्वेश्चंस रो. ओके, समस्त जो माने पार्टिसिपेट करिवो, आई वुड आस्क एवरीवन टू आंसर पिंग करिके तुम आंसर दो. डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल, राइट, फॉर ऑल ऑफ यू. निजर प्रैक्टिस भी हबो. फर्स्ट क्वेश्चन हम करिवा. फर्स्ट क्वेश्चन जदि हम देखिवा कि और अर्थ इज an earth is geoid in shape. जदि हम देखिवा तो earth is geoid in shape. Which of the following evidence proof the earth's sphericity? हम अर्थ जदि देखिवा अर्थ रो शेप ता हला जियोइड हला. जियोइड माने जोटा के ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहंत मन रखो. जियोइड रो आ गुटे जिंस हला कि ताको कहंत ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहंत हला. एटा मन रखो ऑब्लेट स्फेरॉइड माने अंडा करते भले ओवल शेप, राइट, ओवल शेप कमला भले ओवल शेप. अच्छा, यार पछरे रीजन कोन द अर्थ स्फेरिसिटी कोन कोन. फर्स्ट क्वेश्चन मन देखछो. फर्स्ट इज अर्थ रो जो को एविडेंस गुडा प्रूफ करछि अर्थ रो स्फेरिसिटी ऊपर. ओके, स्फेरिसिटी माने स्फेरिकलनेस ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, circumnavigations of the earth रो circumnavigation जोटा फर्स्ट. देन द सर्कुलर होराइजन सेकंड. थर्ड रे सनराइज एंड सनसेट. फोर्थ रे प्लानेटरी बॉडीज एंड द स्फेरिकल बॉडीज. कोन के मते कहि परियो आंसर एबीसीडी मु देबी पांचटा भितरे. देखो फर्स्ट जदि मु देबी कि circumnavigation of the earth, this is absolutely correct. circumnavigation जो हम रूट टा सेतु जाना पड़छ कि नहीं अर्थ इज स्फेरिकल. सेकंड, सर्कुलर होराइजन, yes absolutely it is also correct. सर्कुलर होराइजन में हम देखबा कि yes it is सर्कुलर होराइजन इज अर्थ जदि हम देखबा कि it is तार होराइजन टा सर्कुलर. काहे कि तुम सी बीच पकड़ ठिया हो तुमको देखा हो जिंस. इट इज जस्ट लाइक एन सर्कुलर होराइजन. पूरी बीच पकड़ ठिया एकदम देखो कि either you go for the Arabian seaside or the Bay of Bengal side, you will find the same thing, right? This is correct also. Sunrise and sunset, sunrise sunset रू भी हमको जाना पड़े जेमती सूर्य धीरे धीरे तळ को जाउछंती कि ऊपर को उठुछंती प्राय मार्क करथो सनराइज सनसेट. दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. तो बंचला कि 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नहीं. जदि तुम 4 भी जानी परनो ताल तुम कोन करियो एटी सीधा मन को प्रीलिम्स रे एलिमिनेशन टा बहुत जरूरी तबे करबा. सब चॉइस रू भी तुम केमती धरिबो हैला. हैव टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट एंड दैट टाइप ऑफ अटेंडिंग द क्वेश्चन. तो इतने नहीं आराम से इतने ऑल लिखि दो. माने आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ टू फेस द योर डील विद द दिस चॉइसेस एबीसीडी विथ 1 2 3 एटी करेक्ट. माने जदी 1 2 3 थांता 4 न थांता आ अलगा कोन देथन देन 1 2 3 ओनली देथले तमे भाबी था. किंतु देइनी माने सीधा आखि बंद कर डी मारियो. बट लास्ट 4 ऑप्शन देखियो प्लैनेटरी बॉडीज एंड स्फेरिकल. एब्सोल्युटली काहे कि समस्त जो माने ऑल प्लैनेट्स दे तांकर जो रेवोल्यूशन पाथ था ऑर्बिटल पाथ रे स्फेरिकल. ओके, सो एथरो कोन हम प्रूफ रो डी फॉर दिल्ली कि अर्थ रो स्फेरिसिटी पई जदी हम देखिबा कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्फेरिसिटी पई के प्रूफ करछ अर्थ रो, then these 4 evidence are correct absolutely. One is your planetary bodies, that's माने revolutionary path, that is orbital. Sunrise sunset हैला सूर्य ऊपर को जाने तळु जाने हमको एटा appears हैला बट जेटा appears किंतु एक्चुअली सेटा नुह. इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ में हमको फील होची. सर्कुलर होराइजन absolutely that is correct. circumnavigation of the earth. So एथरो हला आंसर टा डी फॉर दिल्ली. ए माने प्रूफ करछन अर्थ स्फेरिसिटी. नेक्स्ट question answer दियो. Consider the following statements and select the correct answer using the code given below. कौन दीजिए code रे? The part of continent under the marine water is known as continental shelf.
है part of the continent under marine water is known as your continental shelf जदि हम देखिबा this is absolutely correct काहे कि continental shelf जदि मु बनेबी this is right continental shelf this is जदि हम देखिबा this is your continental shelf this is हला मन रख एटा हला हमर कोन land एटी this is your continental shelf eta this is your continental shelf and this is your continental slope this is the chronology है ना जोटा कि देछि under the marine water is known as continental shelf समुद्र पानी तुम जो जाउ छ समुद्र पानी ए पर्यंत रहे ठीक अछि this is land so it is under जो लिखिला this is completely under the marine water is absolutely correct मन रखो this is second the slope of a continental shelf is 1 degree कौन दीची the slope of a question statement गुडा को पढ़ो the slope of a continental हला 1 degree this is also correct normally देखा है ची as per the your oceanologist समान देखि छन कि continental shelf रो जो तंकर डिग्री टा मेंटेन होता है it is always you know 1 point something or 1 भितर minimum हला ताठू अधिका न थाए so continental shelf टा तुम देखियो तले समुद्र रे गाधो छ तले तुम देखियो प्राय तो तुम मन लगे चाली चाली पड़ेबो it is like this one so 1 degree बेसी न थाए just a you know it is just a submerged part of the land जोटा कि मैं एठी बनै छी हला this is land a रे this is b yourself this is your slope and तळकु rise and abyssal plains next the continental shelf reaches depth about 200 meter depth को reach करछि absolutely correct जदि हम देखिबा कि on an average रे 200 meter तळकु continental shelf जाइछि so या भितर आंसर कोन हम देखिबा abcd भितर जदि हम देखिबा your answer जदि देखिबा your answer is 1 and 2 2 and 3 1 so all are correct so your answer is your D for Delhi right answer is your D for Delhi एठी मन रखो हला all are correct सब जंका एठी correct these are is it okay any further questions let me know ठीक अछि का कुछ पचारि अछि will proceed then एटा करो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा consider the following statements number 1 natural gas occurs in the Gondwana beds प्रथम क्वेश्चन हला कोन देली natural gas occurs in the Gondwana beds okay second mica occurs in abundance in Koderma माने कोठी मु झारखंड कहते Koderma means your Jharkhand then Dharawars are famous for petroleum Dharawar are famous for your petroleum okay देखिबा अभी तो 1 and 2 only then खाली 2 only 2 and 3 only none देछि देखिबा भीतर अच्छा अरे एते जण अच्छो पार्टिसिपेट करो दियो आंसर दियो भूल हो ठीक हो इतरे डरिवार कोन अछि भूल हेले ही ठीक ता हो हले अच्छा प्रथम देखियो नेचुरल गैस ऑकर्स इन द Gondwana beds बिल्कुल भूल Gondwana beds is basically famous for your coal not natural gas एठी होगनी Gondwana beds नो Gondwana beds रे मेजर कोन रहे this is wrong this is your coal पाई coal series पाई हला coal series पाई हमरो जे देखियो मेनली Gondwana bed famous so statement 1 wrong हला तमे सब चॉइस केमति नबो देखो so 1 भूल हला 1 भूल माने ऑप्शन ए गलत हला आउ तीनटा ऑप्शन बंचिला तापर देखिबा mica occurs in abundance in Koderma एक्चुअली जब हम देखिबो Koderma जोटा झारखंड रे अछि Koderma is a district Koderma is basically famous for your mica mining ता बहुत अधिक हला जानि के रखो रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेस बहुत पचार जन क्वेश्चंस हबे सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट 2 करेक्ट हला mica में जानले Koderma झारखंड रो माइन सिटी हुए abundance सो 2 करेक्ट तो तमे इट जाने नॉन टाइम काटी दिला नाही गुटी करेक्ट अछि सो दीटा ऑप्शन कटिला बंचिला बी सी एथे भी 2 अछि एथे भी 2 अछि आगु जीवा देखियो पुणी देला Dharawars are famous for petroleum now the question is that where is Dharawar गोटे जगह जदि हम देखिबी Dharawar is a place in Karnataka मन रखो Dharawar is a place right Dharawar is a place in Karnataka एई जगह Dharawar is a place this is your Dharawar series तमरो अछि जियोलॉजी रे हला Dharawar series is basically for your iron ores
and manganese. Basically iron ore series बहुत भलो मिले, iron ore बहुत भलो ग्रेड iron ore Dharawar अछि कर्नाटक. Dharawar is a place in Karnataka. So एटी पेट्रोलियम देइला एटी रॉन्ग हो गेला. ठीक अछि. So हमें कोन जानले तीन रॉन्ग हो गेला, so एटा भी रॉन्ग हो गेला. So only B is correct. So answer is B for Bombay. पुणी अगेन मु रिपीट करूची, Dharawar series जोटा हला कर्नाटक रे, that is basically famous for your iron ore series. Also manganese भी मिले. पेट्रोलियम हबनी ये तीन गलत थला, तीन को माइनस कर देला. आगुर तापर नेचुरल गैस गंडवाना रे बिल्कुल मिले, गंडवाना है कोल पाए. सो ओनली 2 इज करेक्ट. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो वर्तमान आगुर सब आस्तला वन लाइनर क्वेश्चन, वर्तमान वन लाइनर आसले भी समान ता भीतर गोटे फैक्ट भी कांसेप्ट हम भाबिया को बाध्य हो. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी एला वर्तमान समान जो लास्ट 4 वर्ष वाला होची स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा प्रिपेयर हो हला. एनसीईआरटी पढ़ा भला भी डेफिनेटली इट विल हेल्प. 3 नंबर ता गलत था. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम सरफेस टू द इनर कोर. कौन कहली? फ्रॉम सरफेस टू द इनर कोर ऑफ द अर्थ एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सरफेस कोड कौन कौन? प्रथम देची lithosphere, mantle, then your solid core and molten. ठीक अछि. आंसर कौन दला? क्वेश्चन कौन देची कि arrange the following from the inner core of the earth through surface through inner core को तमे जीवा. surface through inner core को. अच्छा अर्थ रो जदी मु बनेबी अगेन तमे निजे भाबो surface through inner core को. this is your crust, हमें जानि चंदी this is your mantle and this is your core. right. वर्तमान किंती देछि कोन your lithosphere, mantle, then solid core, then molten core. right. एई भला देछि. तो देखिबा फर्स्ट जदी देखिबा फर्स्ट हमें देखिले कि lithosphere is correct. तमे तळु को जाउछो मु लिखली प्रथमे lithosphere हैला. lithosphere. then next आसी तमरो mantle हैला. mantle आसी this is we know. lithosphere माने हमें एटी जानले this is your nothing but your crust. थर्ड राशि के सॉलिड कोर और मोल्टेन कोर. मन रख जदि हमें कोर दी प्रकार गोटे आउटर कोर इनर कोर. इनर कोर इज सॉलिड जोटा कि तळे अछि सबुठ तळे. ता ऊपर अछि के मोल्टेन कोर. सो आंसर एटी कोन हो? मोल्टेन कोर. राइट. मोल्टेन कोर देन सॉलिड कोर. सो क्रोनोलॉजी इज लाइक दिस वन. राइट. क्रोनोलॉजी. सो कौन जानलो? 1 एटी हम जानले कोन 1 2 4 3 चॉइसेस देखो. तो आंसर तुम देखो जदी दिस इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर. प्रथम तळु को आछे लिथोस्फियर. लिथोस्फियर पर देन योर आछी mantle, then your outer core, then your inner core. This is the chronology that how it if one visits from surface to the core. Right. Any further questions let me know. This is the correct chronology कि तमे जेतले अर्थ रे तमे आछो क्रस्ट रो नेकी कोर पर्यंत. सो दिस इज योर करेक्ट chronology. मन रखो आउटर कोर सब बड़े लिक्विड फॉर्म में था और सेमी लिक्विड फॉर्म में था, where the inner core is your solid. Okay. next question करो. examine the following statements and select the correct answer. again प्रथम select the correct answer. international line is located 180 degree longitude. again latitude longitude ऊपर क्वेश्चन आसिला. international line is located on at 180 degree longitude. 180 degree longitude रे international line अछि. बिल्कुल हैला. absolutely correct. 180 degree हम जानि चंती. ठीक हमरो जीरो मेरिडियन जो हमर अछि प्राइम मेरिडियन ठीक तार पछु जोटा अछि that is 180 degree हैला. line is located 180 degree longitude. this is absolutely correct. आंसर देछि आ भितर की करेक्ट. नेक्स्ट कोन दला. international line is not a straight line. इटा स्ट्रेट लाइन नुहो. इंटरनेशनल लाइन बिल्कुल हैला करेक्ट. इंटरनेशनल लाइन जदि तमे देखो इट इज ऑलवेज जिगजैग. एमटी एससी हैला. दिस इज जिगजैग. जिगजैग लाइन. इंटरनेशनल लाइन था जिगजैग है कैसे इंटरनेशनल लाइन. दिस इज नेक्स्ट. चाइना हैज 2 टाइम जोन्स. कि मते कहबो चाइना हैज 2 टाइम जोन्स. दीटा टाइम जोन्स चाइना.
अरे एते जण अच्छो पार्टिसिपेट करछो तमे दियो आंसर बॉक्स रे दियो चाइना हैज 2 टाइम जोन्स एटी भूल हेगला चाइना हैज 2 टाइम जोन्स नो इंडिया बढ़िया चाइना रो भी गोटिए टाइम जोन 1 टाइम जोन चाइना हैज 1 टाइम जोन प्लीज हला नोट करनी नेक्स्ट सो 3 गलत हेगला 1 1 2 केमती तमे देखो चॉइस हटा तमे 4 नंबर तुमको आसुनी ऑस्ट्रेलिया हैज 3 टाइम जोन्स तमे जानि ही ना तुमको माने तुम यू डू नॉट नो बट सेथरे तमे संग संग डरी की छाड़ दबनी क्वेश्चन कोन हबो देखियो चॉइस रो एलिमिनेशन प्रोसेस रो जीवो 1 2 करेक्ट देखला हला देन 3 तमे जानलो भूल हैला तो ये संगे संग 3 भूल माने तमे जानलो 3 को संगे संग एलिमिनेट करिवो एटा भूल एटा भूल एटा भूल एठी तमे पाई गेलो 1 2 4 आर करेक्ट माने जस्ट आई एम टेलिंग बाय नोइंग 70% आंसर बेले बेले गोटिए क्लू रो भी तमे आंसर टा पाई दियो सब एलिमिनेशन बैक फायरिंग रे जाओ इट विल बी मोर इजियर फॉर ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स जानी थिवा दरकार नॉलेज डेप्थ अदरवाइज कॉन्फिडेंस टा रहइबन नले हैला ऑस्ट्रेलिया हैज 3 टाइम जोन्स दिस इज करेक्ट सो हम इथरा में कोन जानले कि इंटरनेशनल जदि हमें देखिबा कि दिस इज बेसिकली ए जो क्वेश्चन है हला एटी तले करेक्ट कोटा हला दिस इज योर बी फॉर बॉम्बे आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे आउ ए बडा क्वेश्चन कोन पे पचर जन से माने डेफिनेटली तमे उठे की देखो ओपीएस रे बहुत सारा पचरा होती ए बडा क्वेश्चंस रिपीटेडली हला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रे क्वेश्चन टा आसी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिस बेसिकली ए क्वेश्चन टा आसी ओके फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है got the question level tougher kichi nahi question number is purely your NCERT based that is jodi dekhibo ki very very fundamental questions hala puni again dekhiba statement kon deichi select correct dekhiba the primary seismic waves are analogous to sound waves prathame dela kon dela the primary seismic waves I mean seismic mean earthquake waves seismic waves means your earthquake waves seismic waves mean earthquake waves हैला प्राइमरी दी प्रकार वेव अछि हम जान प्राइमरी और सेकेंडरी सो माने कोन हले एनालॉगस टू साउंड वेव्स यस इट इज करेक्ट साउंड वेव जदि देखाई छी पी वेव्स माने प्राइमरी वेव्स माने पी वेव्स कथा को आउछ पी वेव्स बेसिकली पी दिस इज पी वेव्स P waves basically analogous to your sound waves हैला साउंड वेव संगे से एनालॉगस ता संगे हैला ताकू माने जदी तमे साउंड वेव संगे देखो ता संगे से मैच करे पारला सेकंड द प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम हैला आज जदी हमें देखिबा कि प्राइमरी वेव्स रो कोन कि इट इज पास इट कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसियस मीडियम एब्सोल्युटली करेक्ट प्राइमरी वेव्स मन रखो सॉलिड रे भी ट्रैवल करे माने यदि हमें गोटे डायग्राम नबा कि दिस इज अगेन कोर मैंटल एंड क्रस्ट यदि इट ब्रेक कला देन प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल इट यस हला इट कैन सबवर्ड एमटी जीवो हला इट कैन ट्रैवल बोथ सॉलिड गैस दिस इज योर पी वेव्स मन रखो एस वेव ता जाई पारे दिस इज योर एस वेव्स बट पी वेव्स यदि तमे देखिबो इट कैन पासेस थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस एज वेल दिस इज करेक्ट सो 1 2 करेक्ट हम जानले 1 2 करेक्ट जदि ऑप्शन हमें देखिबा एतरे 2 नाही तो एतरे जोतरे 2 नाही 2 को एतरे 1 के 2 नाही काटी दियो तो हमर जानले निश्चित रूपे कि ए और डी भीतर आंसर हो देखो चॉइस केमति तमर कॉन्फिडेंस बढ़िबो तमे जानले कोन 1 2 करेक्ट ठीक अछि किन चॉइस रे तमे देखिलो जोठी 2 नाही सेटा काटिबो सी काटिलो जोठी 1 नाही सेटा काटिबो एटा काटला तमन रहिला कि एलिमिनेट ताने हम जानले 50% एलिमिनेट कले ए और डी भीतर आंसर हमर अछि हैला स्ट्रगल सबले करियो क्वेश्चन संगे निजर इंटेलिजेंस लगे कि हला आ उपस्थित हो प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड नेक्स्ट द स्पीड ऑफ द प्राइमरी वेव्स मन देख सुनो स्पीड ऑफ द प्राइमरी वेव्स is more in the sedimentary rocks than that in the granite and basalt क्वेश्चन कोन रहा देखा माने प्राइमरी वेव्स पी वेव्स रो तार स्पीड ता से कहूची सेडिमेंटरी वेव्स रो बहुत अधिक है बट ग्रेनाइट बासाल्ट रे कम हला एटी मोर इन सेडिमेंटरी रॉक्स देन माने ता अपेक्षा ग्रेनाइट और बासाल्ट एटी भूल हे उल्टाटा कहि देला पी वेव्स रो जदि हमें देखिबा कि पी वेव्स रो स्पीड ता ग्रेनाइट और बासाल्ट रे अधिक देन योर सेडिमेंटरी रॉक्स हला सेडिमेंटरी रॉक्स रे कम और इथरे बेसी उल्टा कहि देला सो तीन भूल होला माने एटी बिल्कुल हमें ऑलरेडी एलिमिनेट कर सालेनी संगे संगे हमें डी माले आंसर इज नथिंग बट
A for Agra. Is it clear to everyone? Right? Next. 7 number question दीजिए. Consider the following statement and select the correct answers. कौन दीजिए. First question. All the processes acting at or near the surface of the earth, है ना, at or near the surface of the earth are known as weathering, है ना, जଣା होच. अच्छा, बिल्कुल absolutely correct. Weathering माने you are breaking down and disintegration of the rocks ताको कहते है ना, physical weathering, chemical weathering, है ना, and biotic weathering जोटा था. Acting at or near the surface of the earth और जो process अच्छी process में भी है ना, weathering process we can say the physical temperature जीवो है ना, then chemical रे your acids जीवो and biotic रे your root रो acids भी जीवो. So one is correct हमें देखिले. Next, weathering is not effective in hard granite. One हमें correct देखिले है ना. Weathering is not effective in hard granite. एट भूले. Weathering, chemical weathering इतने powerful, granite भलिया पत्थर को भी से भांगी दो. It is so powerful. So 2 minus कले एटी देखो. 2 minus हला माने कौन हमें जान ले. 2 कोचरे नहीं. 2 जोचरे अच्छी. 2 माने 2 हला. तुम्हारा देची तुम्हारा कौन? Correct answer. तो correct rate 2 कोचरे नहीं. 8 हमें गुट्टिये पाई गए. 1 out 2 तुम्हें 1 out 2 3 4 जाई ना कि तुम्हें आंसर पाई गए. 2 जोचरे नहीं. 1 correct अच्छी. देखो 1 correct अच्छी. आउ सबुतरे तुम्हारा 3 4 सब जगह अच्छी. 2 टा किंतु रहिबोनी. जोतरे 2 नाही माने एथरे देखो. 2 करेक्ट देछ माने एटा बोल. 2 करेक्ट देछ माने करेक्ट देछ. 2 बिल्कुल गलत. 2 एटी गलत, एटी भी गलत. करेक्ट 2 हमें जानले भूल. तो एथरे तुम एलिमिनेटर पाई गलो कि 2 गलत. 2 बिल्कुल ठीक नो. सो ए गलत, सी गलत, डी गलत. आंसर बी. किंतु हमें जानि नांती 3 4 कोन. 1 खाली जानि छिन. 1 करेक्ट और 2 भूल. This is the process of elimination that you have to develop such kind of practice. Third देखिबा पुनी एनालाइज करिबा. Frost action is an important form of physical weathering. Absolutely correct. Frost action जदि हमें देखिबा है ना, frost action it is a physical form of is an important form of physical weathering. बिल्कुल. जदि तमे higher latitudes और higher altitude country को जीवा, frost action माने frost माने कोन? माने बरफ टाको बुझु frost हैला. Frost action माने रेगुलर कंट्राक्शन माने कोन हुए दिन बेला आइस मेल्ट करे and रात्रि पुनी कोन हुए आइस टा जमाट बांधे. So that is called your freeze thaw action. एटा को कोन कुआ जाय? Freeze thaw action. Freeze thaw action सेटा हुए हैला. Next, frost action is limited to mid latitude and higher latitude. बिल्कुल mid latitude और higher latitude absolutely correct. Mid latitude और high latitude रे frost टा देखा जाए हैला. Majorly frost माने your snowfall जोटा देखा जाए हैला. higher latitude माने beyond 45 degree 50 degree. So answer हमें जान ले 1 3 4 is correct. So answer is B for Bombay. I hope it is clear to everyone, right? Next, question करा. The annual range of temperature in the interior of the continents. कौन दला question? The annual range of temperature. Range of temperature दे दिला. Annual range of temperature in the interior of the continents is as high as compared to the coastal areas. हैला. Coastal areas to जदि interior देखियो हैला temperature अधिक है. आ माने of course हैला अधिक ही थाए coastal area रे हैला. reason जानिबा कोन? हमें एती जानछि ना coastal area रे टिके ठंडा माने गरम टिके कम लगे काहे ना पवन दिए आउ भितर रे बहुत गरम लगे. Absolutely correct. देखियो ता reason. What are the reason or reasons? कौन है पारे? Number 1, thermal difference between land and water. Land and water भितरे thermal difference बिल्कुल था. काहे कि ना land is getting heated or cooled because of the process of your conduction, and water body is heated and cooled in the process of that is convection. है ना? So बिल्कुल thermal difference बिल्कुल absolutely correct. 1 is correct. Next, variation in altitude between continents and oceans. हैला. कौन कहला? Altitude. Variation in altitude between continents and oceans. ता माने
कंटिनेंट्स अल्टीट्यूड माने कौन अल्टीट्यूड माने हला तमर एलिवेशन से कहूची हाइट और एलिवेशन को कहूची आ माने हला एलिवेशन और हाइट को नै की से कहूची कंटिनेंट्स आर हला देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफ कोर्स जदी तमे देखिवो कंटिनेंट्स रा प्लेसमेंट हला ऊपर अछि इट इज लाइक दिस वन कंटिनेंट्स आर दिस लाइक एटी हला तमरा this is your oceans basins and this is your continents and this is your ocean eta this is your continents absolutely correct second statement समझ जानले 1 2 करेक्ट थी 1 2 इट बिल्कुल देछि किंतु तापर भी पुनी देछि 2 3 4 पुनी 1 ओनली पुन 2 3 4 एबडा देछि पुनी भी कंफ्यूजिंग एबडा क्वेश्चन टिके पेशेंस तमे टिके ताको डील करियो पेशेंस हरै देला माने निश्चित रूप भूल 1 2 खाली एटु तमे गोटे खाली माइनस कले 1 माइनस नै 2 भी करेक्ट अछि एटी देला 2 3 ठीक अछि ଆଉ 1 देनी ମାନେ एटा को हम एलिमिनेट कले एटा को एलिमिनेट कले देखो 1 2 करेक्ट तुम जान एक भी करेक्ट दुई करेक्ट 100% सो हमें कोन देखिबा को ऑप्शन देछि 1 ओनली तन भूल गेला 2 भी अछि एठी देला कोन 2 3 ओनली 1 नाही किंतु 1 करेक्ट अछि एटा भूल मानले 2 3 4 आंसर आखी बंद करके बी फॉर बॉम्बे मारी दस दो यू नो 3 4 तमे पन जानि बुझिला नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड्स इन द इंटीरियर बिल्कुल सेटा नो हला जदि हम देखिए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड्स इन द इंटीरियर स्ट्रांग विंड्स काहे कि इंटीरियर रह जदि मु जिबी मध्य भारत पथ तेलंगाना और महाराष्ट्र विदर्भ एरिया से बिल्कुल पवन ही नहीं स्ट्रांग विंड्स जदि सब देखियो एक्चुअली स्ट्रांग विंड्स इंटीरियर न थाए हला पहाड़ ऊपर थाए इफ यू गो टू द माउंटेन एरिया स्ट्रांग विंड्स आर देयर इफ यू गो टू द योर कोस्टल एरिया यू विल फाइंड द स्ट्रांग विंड्स देयर है सो इट भूलेगा then heavy rains in the interior as compared to the coast bhul ulta koi dela interior is always devoid of moisture or inadequate of moisture is always prevailing in the interior parts of a continent काहे समुद्र कूल दूर था सो आंसर 3 4 गलत सो देखो एठी हमें केवल प्रीलिम्स जो भी एग्जाम बाहर कर केवल ट्रिक्स से बाहर कर इट इज ऑल अबाउट द पेशेंस कितने तमे काम माइंड कितने तमे पॉजिटिव अच्छो that definitely help you to sort it out the questions or resolve the questions है सो एठी हम जानले कोन 3 4 गलत हेगला 3 4 गलत तर एमती 3 गलत 4 गलत तो पूरा ही एथे 1 2 आउ केमती केवल 1 2 तमे जानि खाली मु कहबी सब बडे चॉइस को मार्क करियो तमरो ओएमआर सीट रे तुमको फाइनल रे माने तुमको एनसार्कल करिवार अछि सेटा हला मेजर थिंग्स एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ वेरी काम ब्रेन वेरी पॉजिटिव ब्रेन हैला सो हम जानले आंसर 8 इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट 9 नंबर देखा which of the following statements regarding laterite soil of India is correct हैला इंडिया रे laterite soil जोटा अछि या भितरे के करेक्ट किया भितरे which of the following is laterite soil is correct number 1 they are generally red in color laterite soil generally red in color absolutely correct हैला red in color ठीक अछि सी थाए because of the presence of the iron से माने रेड इन कलर हम जानते रेड इन कलर दिस इज करेक्ट रेड कौन पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू और बिकॉज ऑफ आयरन Fe आयरन पे मन रख हम जानते नेक्स्ट दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास कौन में जान ले दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास बिल्कुल न था नाइट्रोजन फास्फोरस न था इवन इफ एनपीके रु के भी कम था नाइट्रोजन पोटास तो एमिति तो इंडियन सॉइल्स आर डेफिसिट इन नाइट्रोजन राइट सो इट भूल हेगला 2 गलत हेला 1 करेक्ट 2 गलत 2 हमें जान ले ताने जोटा करेक्ट देछि 2 जोटी लिखा है सेटा को एलिमिनेट करियो तो माने ये बोला आखी बंद करी ये गलत ये भी गलत आंसर एठी हम पाई गेले सी एलिमिनेशन जिनछरा तमे मेन हला के केमते एलिमिनेट करे सेटा बहुत बड़ जिंस हला जोटा कहूछ एडी केवल जानले कि 1 सही है 2 गलत है 2 जोटी देछि करेक्ट सेठी पूरा माइनस कर ताले बणी पड़ला खाली गोटे सी पुनी कौन देखियो स्टेटमेंट they are well developed in Rajasthan and UP बिल्कुल ही भूल UP is basically gangetic plains and Rajasthan is also your जो देखो Indus basins and इमरे थर्ड डेजर्ट एपटे एपटेला plains हैला एपट रहला तमरा बानेश्वर प्लेन अरावल रो ईस्ट पटे अरावल रो वेस्ट पटे थर्ड डेजर्ट बिल्कुल भी वेट नहीं तमरा लैटेराइट सॉइल हैला माने दो प्रेजेंट इज देयर वेल डेवलप्ड जो लिखला वेल डेवलप्ड माने सेठी भूल हेगला अच्छा 2 3 गलत हे गेला हमें जान लेनी आंसर एटी टॉप हैला tapioca and your cashew nuts माने काजू are grow well on these soils बिल्कुल absolutely correct laterite soil रे
तमरो काजू बादाम और टापियोका बहुत भलो हुए सो आंसर हम जानले कोन 1 4 इज करेक्ट 1 4 सो आंसर इज योर C for Katak ओके आई होप समस्ते धरी पड़थो द माने जो द वे जो जिंस हम तुमको मेसेज दवा को चाहूची हैला दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड इज ऑलवेज हैला नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस who coined the term plate the central theme of plate tectonics किए करथले काइन हैला who coined the term plate जो वर्ड था सेटा किए कहितले who coined the term J.J. Wilson, J.J. Morgan, then James Jeffrey and your Immanuel Kant. Who coined the term as plate ऊपर अच्छा जदि हम आंसर देखिबा समस्त प्राय कहत कि J.J. Morgan इट्स नॉट ये सॉरी W.J. Morgan बिल्कुल आंसर जदि देखिबो J.J. Wilson आंसर इज A is correct J.J. Wilson मन रखो मोर्गन जी सी कौन करथले प्लेट टेक्टोनिक्स बहीटा को पब्लिश करथले तो माने थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी टा को पब्लिश करथले के ये W.J. Morgan राइट J.J. Wilson प्रथम प्लेट बोली टर्म टा को से कहते क्रस्टल प्लेट जो वर्ड टा को प्रथम J.J. Wilson करथले देखो बर्तमान जदि मु कहबी थिंकर्स ज्योग्राफी रे जो आसुची थिंकर्स एमाने करे एमाने को ऊपर भी बर्तमान पचारचोनी समान क्वेश्चन सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन दैट पार्ट हला वी कैन नॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पचारचोनी प्रथम इमानुएल कांट ऊपर पचारचोनी स्पेसिफिक ऊपर हला तो ई पढ होई गडा वेरियस एनसीईआरटी केवल ही हेल्प करबा कुछ ना अलगा को बहिरे एते जिंस देई नेक्स्ट रिवर कैप्चर is the result of which among the following river capture मु कहली river capture is kahar which among the following number 1 is your downward erosion number माने A रे B रे हला प्रथम देला कि downward erosion river capture B downward and headward erosion हला downward and headward erosion माने downward खाली देला पूरी downward and headward देला next lateral erosion then sideward erosion what is the answer lateral और sideward तो बिल्कुल भी हबन काहे कि मन रख river capture जो प्रोसेस ता रहे that is always took place in the youth stage of a river this river capture phenomena that took place nearly youth stage of a river when river velocity when you know because due to I mean like परिवा due to high velocity or speed of the river or speed of a river जेहेतु river बहुत पावर थाए ना हाई वेलोसिटी आ बहुत पावर थाए ते समय रिवर कैप्चर ता नॉर्मली यूथ स्टेज रे हुए ठीक अछि डाउनवर्ड एरोजन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट डाउनवर्ड एरोजन इज करेक्ट बट देछि डाउनवर्ड एंड हेडवर्ड एरोजन एमती काटी एमती गोटे स्ट्रीम बोची एपटे गोटे स्ट्रीम बोची ये कोन करिवो ए रिवर टा वेरी पावरफुल देन बी रिवर मन रखो ये कोन करियो जेतु बहुत पावरफुल रिवर आ एटी लिथोलॉजी कंडीशन भी वीक अछि से धीरे धीरे कोन करियो एमती काटी जिवो ए रिवर टा एमती माडी जिवो ए रिवर टा एमती माडी जिवो सो कोन हो आकु ए रिवर टा को मिसे देबो ता संगे दैट इज कॉल्ड योर रिवर कैप्चर राइट सो इट कोन हो डाउनवर्ड एंड हेडवर्ड एरोजन ऊपर ऊपर काटी जिवो सो आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे सी नॉर्मली मु देखे वर्तमान तमरो क्वेश्चन जो समय पचारुचंती जदि हम देखिबा लैंडफॉर्म्स ऊपर पचारुचंती डेफिनेटली क्वेश्चन पचारुचंती सेटा ग्लासियल लैंडफॉर्म हो कि एओलियन लैंडफॉर्म हो कि फ्लूवियल माने वाटर लैंडफॉर्म्स हला तो लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द रिवर्स तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आर देयर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढो जीसीलियन भी आल्सो हेल्पफुल राइट बट जीसीलियन 2-3 थर पढले तमे इजी रहइबो जो माने बिगिनर अछ मोर ताकू डेटिक एडवाइस एनसीईआरटी पढो तापर जीसीलियन पढो इट विल बी इजियर राइट so answer डी हम जानले so downward and headward erosion answer is your B for Bombay okay hope everyone आज पे मैं एती रखुची सेशन रे तुमको होप जहां भी पढ़ाला ताकू मन रखो ए जो 11 टा क्वेश्चन गले मेक श्योर दैट कि आपको तमे 40 टा क्वेश्चन तमे नै परियो तार चॉइसेस रे तमे सबले चेक डील करियो म आगुर जेमति भी कहला सबले चॉइस को भी देखो डेफिनेटली इट वुड बी हेल्पफुल जो हम सिखवार अछि ओके किसी अनाउंसमेंट जेमति कि मु कहछि ज्योग्राफी ऑप्शनल ओडिशा सिविल्स रे हमर एकेडमी रे ऑलरेडी चलछि okay both UPSC and OPSC रे ऑनलाइन बैचेस एंड योर
the offline batches for the UPSC, right? So online batches already started from last 5-6 months. Those who are, they can contact me. Okay. Test 3 is also going on. Those who want to appear, then also join with us, and also the GS batches also going on. Okay. So thank you so much. Thank you all for your patience. We'll again meet. Amen. Okay. Now, egudaku bhala bhabe padha. Definitely, it would be helpful, right? It would be helpful tammanku. Thank you. Thank you so much. Okay, we'll meet again. Outre puni meet kariya with the MCQ series neki puni hai na geography environment jo important things we'll cover that one. Okay. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much.